Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lesson 14 deals with use of a number of and the word the number of. So अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि इन दो लफ्ज़ों को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके लिखा जाता है तो दिस लेसन इज़ फॉर यू. सो लेट्स जंप इनटू दिस लेसन, दिस शॉर्ट क्विक लेसन. A number of followed by plural noun followed by plural verb and then rest of the sentence. इसके अलावा इसके मुकाबले में द नंबर ऑफ़ के साथ हम प्लूरल नाउन फॉलो करते हैं बट दिस विल बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. सो इनको इस तरीके से मेंशन करने का मकसद ये है कि आपको क्लैरिटी हो कि अ नंबर ऑफ़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन बट विद अ प्लूरल वर्ब. इन कंट्रास्ट द नंबर ऑफ़ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड देन सिंगुलर वर्ब. टू हैव मोर क्लैरिटी हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल 1 says a number of students are going to the class picnic. A number of is a many. ठीक है. So since there are many students, so the plural noun and followed by plural verb. The number of days in a week is 7. So the number of days, अब the number के बाद आपका plural noun days आता है and this will be followed by a singular verb is 7. Then a number of the applicants, a number of plural noun, the applicants have already been interviewed. This is a plural verb. In contrast, the number of residents, again plural noun, who have been questioned on this matter is quite small. So the number of residents who have been questioned on this matter is quite small. So this is also all the details I had for you कि अगर आपको अ नंबर ऑफ़ मेंशन करना है तो आपने उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है विद द वर्ड नंबर ऑफ़. Thanks for watching this video. If you like, share my video, like and subscribe this channel. Thank you.